Hello students, my name is Qazi Khadruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discussing here the chapter number 4th, supply analysis. You should be seeing last lectures we had finished your quantity of demand, analysis of demand or demand, elasticity of demand. So this point is related with your last chapter, demand, supply, price. So in last lecture we will be seeing we have to see your demand and what is the relationship between price. Okay, so it's now a breach of price and supply. It's to be connected with supply. Okay, the supply is also very important point to control the demand price in your market. So now let's we discuss here the supply. Okay, so the chapter number 4 is your supply analysis. Supply analysis, these concepts are related to relationship between the price. Producers are to be willing to sell in his a higher price, that is called, and then it's to be ready to sell, that's price, it's called as a supply. Means a person which is ready to sell in its own price and higher price, and he will be sell out of that price, it's called as a supply. Okay, now let's discuss in the concepts of what is the output, total output, and stock and supply. What is these three concepts are or what is the relationship between these three, output and stock and supply, देखेंगे हम. So let's see. First, output means process of consumption or expenditure to the producing of the goods. All the consumptions, it's called as the output. Okay, यानी जितना भी आप प्रोड्यूसिंग के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और जब गुड्स तैयार हो जाता है तो उसको कहते हैं आप टोटल आउटपुट या आउटपुट कहते हैं. ओके, आई होप आपको आउटपुट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर stock and supply. So the some difference between stock and supply. Stock means generally goods are ready to sell in a particular टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर जो भी आप गुड्स बनाते हैं सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक. यानी आप सेल के लिए जो भी गुड्स तैयार कर के रख रहे हैं विद इन अ टाइम पीरियड, इट्स कॉल्ड एज अ स्टॉक. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर सप्लाई. सप्लाई मीन्स जो आपकी स्टॉक है उस स्टॉक में से आप रेडी है सेल के लिए और आप मार्केट में सेंड कर रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा, यानी स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा आप क्या कर रहे हैं, सेंड टू द मार्केट फॉर अ सेलिंग पर्पज. उसमें से निकाल कर भेज रहे हैं मार्केट के अंदर सेल के लिए. मीन्स पार्ट ऑफ अ स्टॉक which small part of a stock which sent to the market for selling purpose, that's called as a supply. Okay, so I hope you should be understand about what is output and stock and supply. So difference it's also knowing in your in that lecture. The stock means ready to sell goods within a time of period, and supply means part of the stock which is sent to the market for selling purpose. Okay, now next is your meaning. Supply means goods are to be ready to sell and within a time sent to the market, it's called as a supply. Just simple meaning you should know about that. Okay, now next point is your, that is a definition. Definition is to be given in your book. It's a very good definition and you are easy to understand what is a supply. According to Paul Simonson, it's said about that what is a supply. Okay, see here what he said. That he said that the supply refers to the relation between market price and the amount of goods that producers are willing to supply. यानी मार्केट में जो प्राइस चल रही है और वो प्रोड्यूसर के मुताबिक हो, प्रोड्यूसर के हिसाब से हो, और प्रोड्यूसर वो मार्केट में वो प्राइस के हिसाब से, उसके मन चाहे प्राइस के हिसाब से मार्केट में सेल करता है, तो वो कहलाती है सप्लाई. तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका डेफिनेशन जो पॉल सैमुअल्सन ने दिया है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है.
इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सप्लाई अगर आता है आपको, स्टॉक और सप्लाई अगर आता है आपको डिफरेंस के अंदर, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन को. ओके, आई विल बी स्टॉप हियर एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर.